Hello everyone. Let us evaluate some integrals by applying definition of Laplace transform. So first of all, example number 11, evaluate integral from 0 to infinite e to the power minus 2t sine cube t integral with respect to t. To evaluate this integral, we have to compare given integral. जब कभी भी इंटीग्रल की लिमिट 0 to infinite होते हैं, उस इंटीग्रल को हमें अगर इवेल्युएट करना है तो इंटीग्रल को डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रल है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा. सो लेट अस कंपेयर दिस इंटीग्रल विथ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. हेंस गिवन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinite e to the power minus 2t into sine cube t integral with respect to t. By the definition of Laplace transform, if we compare this integral with 0 to infinite e to the power minus st f of t dt, then f of t will be sine cube t and s will be 2. Hence we can write here f of t is equal to sine cube t and s is equal to 2. Value of this integral is nothing but Laplace transform of f of t and replacing s by 2. So this is equal to f bar of s. Value of this integral is f bar of s replacing s by 2. Okay. Now f bar of s we have to find out, means Laplace transform of sine cube t. Hence f bar of s is equal to Laplace transform of f of t and Laplace transform of sine cube t. But sine cube t is 3 sine t minus sine 3t divided by 4, and get the Laplace transform of this bracket. So this is equal to 3 upon 4 Laplace transform of sine t minus 1 upon 4 Laplace transform of sine 3t. Okay, and then Laplace transform of sine t is what? 1 upon s square plus 1, and Laplace transform of sine 3t is 3 upon s square plus 3 square. 3 square is 9. So we can take 3 upon 4 common from both the terms. 3 upon 4 into bracket 1 upon s square plus 1 minus 1 upon s square plus 9. This is f bar of s. Hence we can write I is equal to f bar of s at s is equal to 2. So this is equal to 3 upon 4, replace s by 2 in this bracket, 1 upon 2 square plus 1 minus 1 upon 2 square plus 9. Hence value of the integral I is finally 3 upon 4 into bracket 1 upon 5 minus 1 upon 4 plus 9. So this is equal to 3 upon 4 into 13 minus 5 divided by 65. Is this right? So its answer is 6 divided by 65. This is value of given integral. Let us solve sum number 12. Evaluate the integral from 0 to infinite e to the power minus 3t t square dt. To solve this problem, assume I is equal to integral from 0 to infinite e to the power minus 3t into t square dt. Compare this integral with definition of Laplace transform 0 to infinite integral e to the power minus st into f of t dt. Right hand side, this integral gives definition of Laplace transform, means Laplace transform of f of t. Comparing this integral with this integral, f of t is t square and s is equal to 3. Okay. Now value of integral is nothing but this is equal to f bar of s, means Laplace transform of f of t replacing s by 3. Let us find Laplace transform of f of t. Laplace transform of f of t is equal to f bar of s is equal to Laplace transform of t square. But you know Laplace transform of t to the power n is equal to gamma n plus 1 upon s to the power n plus 1. N is 2, gamma 2 plus 1 upon s cube. So gamma 3 is equal to 2 factorial. 2 factorial is equal to 2.
2 factorial divided by s cube, that is 2 upon s cube. Hence I is equal to f bar of s, replacing s by 3. So this is equal to 2 into 1 upon s cube. Yes, we are replacing by 3. So 2 upon 3 cube, 2 upon 27, and this is आंसर. अभी हम सम नंबर 13 सॉल्व करेंगे. फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t e to the power minus u sin 2u divided by u du. Hence evaluate this integral. कभी कभी सेपरेटली ये सम बोल के आता है या इवेल्युएट द इंटीग्रल बोल के आता है. तो ये भी एक सम है, ये दूसरा सम है. हम दोनों सम एक साथ सॉल्व करेंगे. पहले तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इस ब्रैकेट को एज्यूम करेंगे. तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t e to the power minus u sin 2u divided by u du. Then Laplace transform of f of t is equal to f bar of s. Okay. Now we have to find out Laplace transform of f of t and then assume this as integral I. Let I is equal to integral from 0 to infinite e to the power minus 2t into bracket 0 to t e to the power minus u sin 2u divided by u du, and then integral with respect to t. We are assuming this as I, and then compare this integral with integral from 0 to infinite e to the power minus st. We have already considered this bracket is equal to f of t dt, and value of this integral is nothing but Laplace of f of t means f bar of s, and here in f bar of s you have to replace s by 2. Comparing this integral with this, f of t is nothing but this bracket, s is 2. f bar of s में s को 2 से रिप्लेस करो तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i मिल जाएगा. ठीक है. तो f bar of s फाइंड आउट करने के लिए स्टेप नंबर 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2u, and this is equal to 2 upon s square plus 2 square. 2 square means 4. Then step number 2, we have to find out Laplace transform of sin 2u divided by u, and this is divide by t property. Laplace of sin 2u divided by u applying divide by t property, that is integral from s to infinite Laplace of sin 2u and integral with respect to s. So this is equal to इंटीग्रल फ्रॉम s to infinite sin 2u का लैप्लास कितना आता है, 2 upon s square plus 4, and integral is with respect to s. This is equal to 2 into 1 upon 2 tan inverse s upon 2, value of this integral, and limits are from s to infinite. 2 gets cancelled, hence tan inverse infinite minus tan inverse infinite minus tan inverse s upon 2. Value of this integral is what? 2 into, this is 1 upon s square plus a square, a is 2 square. So 2 into 1 upon 2 tan inverse s upon 2, limits from s to infinite is equal to 2 gets cancelled, then substitute upper limit first, tan inverse infinite minus, then substitute lower limit tan inverse s upon 2. But you know tan inverse infinite is what? Pi by 2. Pi upon 2 minus tan inverse s upon 2, and applying trigonometrical formula, this is equal to cot inverse s upon 2. ओके. तो ये हो गया स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 में जाएंगे तो हमें मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus u into sin 2u divided by u. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2u डिवाइडेड बाई u, इसमें s की जगह s प्लस 1 अप्लाई करना पड़ेगा, s प्लस 1 पुट करना पड़ेगा, इसमें s प्लस 1 पुट करना है. सो कॉट इनवर्स s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. नाउ स्टेप नंबर 4 इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t e to the power minus u sin 2u divided by u du, and this is equal to
1 upon s cot inverse s plus 1 divided by 2. And this is applying Laplace transform property, that is Laplace transform of integral. Okay. Next, step number 5. In step number 5, we have to find out value of integral I. I is equal to f bar of s replacing s by 2. And f bar of s is what? This one. This is f bar of s, suppose. So replace s by 2 here. 1 upon 2 cot inverse 2 plus 1 divided by 2. So this is equal to 1 upon 2 cot inverse 3 upon 2, and this is value of given integral, which is answer. Now example number 14, find Laplace transform of 1 upon t into integral from 0 to t e to the power minus u sin u du, and hence evaluate this integral. So first of all, we have to find out Laplace transform of this bracket. Hence assume f of t is equal to 1 upon t integral from 0 to t e to the power minus u sin u du. Hence Laplace transform of f of t is equal to, we can consider f bar of s. And again we have to assume I is equal to integral from 0 to infinite e to the power minus t 1 upon t into bracket integral from 0 to t e to the power minus u into sin u du is equal to, we are assuming 1 upon t into this bracket as f of t. So this is equal to f bar of s, and in f bar of s we have to replace s by 1. S is equal to 1. Okay. So first of all, we have to find out f bar of s. Hence let us find Laplace transform of sin t or sin u. Step 1. Laplace transform of sin u is equal to 1 upon s square plus 1. Since this standard formula, Laplace of sin it is equal to e upon s square plus a square. Then Laplace of e to the power minus u into sin u. Step 2, Laplace transform of e to the power minus u sin u. This is equal to 1 upon s plus 1 square plus 1. Here sin u is multiplied by exponential function. So applying first shifting theorem, in f bar of s we have replaced s by s plus 1. Okay. Now Laplace transform of this whole bracket. Step number 3. Laplace transform of integral from 0 to t e to the power minus u into sin u integral with respect to u. This is equal to 1 upon s into 1 upon s plus 1 square plus 1. And this is because of Laplace transform of an integral property. So applying this property. And now 1 upon t into this. So step number 4. Laplace transform of 1 upon t integral from 0 to t e to the power minus u sin u du. 1 upon t property divided by t property. Laplace transform of f of t divided by t is equal to integral from s to infinite Laplace transform of f of t. So this is equal to integral from s to infinite Laplace of this integral, which is 1 upon s into s plus 1 square plus 1, s square plus 2s plus 2, integral with respect to s. Now we have to evaluate this integral, and then step number 5. S is linear factor, s square plus 2s plus 2 is quadratic factor. We have to find out partial fractions of this integrand. So this can be written as, since partial fraction method apply करेंगे तो 1 upon s into s square plus 2s plus 2 can be written as a upon s plus b s plus c upon s square plus 2s plus 2. A into this quadratic factor plus bs plus c into s, and on left hand side 1 upon this one. So denominators are same, hence numerators must be equal. Applying this property, we can write 1 is equal to a into s square plus 2as plus 2a plus bs into s plus c into s. कंपेयर करेंगे तो हमें
b इज इक्वल टू माइनस हाफ मिला, c इज इक्वल टू -1 मिला, a इज इक्वल टू हाफ मिला। यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे। और फिर इस इंटीग्रल को हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम यस टू इनफाइनाइट ए इज 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई यस माइनस 1/2 यस प्लस 1 divided by s square plus 2s plus 2 integral with respect to s. Again simplify this, is equal to integral from s to infinite 1/2 into 1 upon s, and here also you can take 1/2 common, minus 1/2 s plus 2 divided by s square plus 2s plus 2। तो इसको हम इवेल्युएट करना चाहते, 1/2 आप कॉमन ले सकते, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2s प्लस 2 आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये बनता है इंटीग्रल फ्रॉम यस टू इनफाइनाइट 1/2 इंटू 1/s माइनस 1/4 इंटू 2s प्लस 4 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 ds। ओके, अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम यस टू इनफाइनाइट 1/2 1/s माइनस 1/4 2s डिवाइडेड बाय 2s प्लस 2, यहाँ से 4 को 2 प्लस 2 करेंगे, 2s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये आएगा माइनस 1/2 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। नाउ इंटीग्रल लेते तो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 को हम s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम s टू इनफाइनाइट 1/2 1/s माइनस 1/4 2s प्लस 2, 2s प्लस 2 इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आया है, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1/2, इसको हम लिखेंगे s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। ओके, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू s। अभी इंटीग्रल ले सकते तो ये आएगा 1/2 log s माइनस 1/4 लॉगरिथम ऑफ s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1/2 tan इनवर्स s प्लस 1, लिमिट्स फ्रॉम यस टू इनफाइनाइट। इन दोनों को क्लब करते तो ये आएगा 1/2 लॉगरिथम ऑफ यस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1/2 एंड देन tan इनवर्स s प्लस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट फर्स्ट एंड देन लोअर लिमिट। इनफाइनाइट पुट करना है इसमें तो s स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनता है लॉगरिथम ऑफ 1 एंड विच इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू π/2 एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग लोअर लिमिट, दिस विल रिमेन्स एज इट इज, हेंस दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस लॉगरिथम ऑफ s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस tan इनवर्स s प्लस 1। Hence this is equal to 1/2 logarithm of 1 is 0, tan inverse infinite is π/2 and this as it is minus logarithm of s upon square root of s square plus 2s plus 2 minus π/2 minus tan inverse s plus 1. So this is equal to 1/2 logarithm of square root of, ये माइनस साइन का मतलब इसका रेसिप्रोकल, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s माइनस cot इनवर्स s प्लस 1, because π/2 minus tan inverse x is cot inverse x. This is value of Laplace transform of f of t. Now value of integral I, this is equal to f bar of s. Suppose I is equal to f bar of s replacing s by 1.
So replace s by 1 in this. This is equal to 1 by 2 logarithm of square root of 1 square is 1 plus 2 divided by 1 minus cot inverse 1 plus 1, that is 2. So this is equal to 1 upon 2 logarithm of square root of 5 minus cot inverse 2. ये हो गया value of given integral and this is answer. Let us solve sum number 15. Find Laplace transform of t into integral from 0 to t e to the power minus 4u cos u integral with respect to u. Hence find the value of this integral. इस इंटीग्रल में आप देखो तो ये ब्रैकेट जो है ये है, इस ब्रैकेट को f of t एज्यूम करेंगे. लेट f of t is equal to t into 0 to t e to the power minus 4u into cos u du, and Laplace transform of f of t is equal to f bar of s, and which is Laplace transform of t into integral from 0 to t e to the power minus 4u cos u du. ओके, तो हम पहला क्या करेंगे, cos u का Laplace ट्रांसफॉर्म स्टेप नंबर 1 एज्यूम करेंगे, फिर e to the power minus 4u into cos u, then Laplace transform of this integral, and then Laplace transform of t into this integral. तो इसको स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4, एंड स्टेप 5 क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, and value of this integral that will be I is equal to f bar of s, and s is replaced by here e to the power minus st, s is 1, s is equal to 1. So step number 1, Laplace transform of cos u, and this is equal to, by applying standard formula, s upon s square plus 1. Then step number 2, Laplace transform of this step, e to the power minus 4u into cos u. Applying first shifting theorem, s plus 4 divided by s plus 4 square plus 1. Okay, and then step number 3, this one, Laplace transform of integral from 0 to t e to the power minus 4u into cos u du. अभी आपको प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रैंड. तो इंटीग्रैंड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, एस प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1. ओके, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू दिस इंटीग्रल, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, स्टेप नंबर 4. स्टेप 4 क्या आएगी, Laplace transform of t into integral from 0 to t e to the power minus 4u cos u du, which is equal to minus 1 to the power 1, क्योंकि t का पावर 1 है, and first order derivative with respect to s of Laplace of this integral, और Laplace इंटीग्रल का Laplace ये है, तो ये आएगा s plus 4 अपॉन s into s square plus 8s plus 16 मीन्स इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s. तो इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू s. हेंस दिस इज इक्वल टू माइनस एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s स्क्वायर ऑफ दिस एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, s प्लस 4 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s 1 आएगा, माइनस s प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s 3s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 17. तो ये हो गया स्टेप नंबर 4. अभी इसमें स्टेप 5, कंसिडर दिस एज f bar of s, हेंस I इज इक्वल टू f bar of s रिप्लेसिंग s बाय 1. इसमें s की जगह 1 पुट करो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा. I इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 17 26 स्क्वायर. न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 17 26 माइनस 1 प्लस 4 5. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट
77 divided by 338. 77 divided by 338, and this is final answer. Okay, so let us stop here. Thank you all. Thank you for watching this video, my dear students. If you like this video lecture, then please share it with your friends and put your comments in comment box. Thank you.